जय भीम नमः बुद्धाय। राजेश भैया जी कैसे हो आप? कैसे हो भैया? मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता वास्ता हो गया आपका? नाश्ता वास्ता हो गया भैया? उठाओ उसको, वहां खाओ। ये ब्रेड चली जाओ, फ्रिज में लगा दे। ऐसे क्यों बेटा फेंक देते हो? बिस्तर में लेटे हैं। अच्छा, अभी बिस्तर में लेटे हैं। अच्छी बात है, लेटे रहो। सुबह से चाय नाश्ता नहीं करते हैं? अच्छा, ओके भैया, थैंक्स। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह उठ के पानी पीते हैं? अच्छा, थैंक यू। पीना चाहिए पानी। हम लोग तो सुबह सुबह उठ के किचन में भागते हैं, फिर अपना पानी खाना नहीं दिखता है। थैंक यू, पानी पी लीजिए। जाओ बेटा, फास्ट जाओ, नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं नहा लूं। जाओ। क्या चीज? तो दे तो दिया उस कमरे में। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। कर लीजिए नाश्ता वास्ता आप भी। जय भीम नमो बुद्धाय। पुष्पा दीदी जी कैसी हो आप? तो नहाने जा रहे थे। कैसे हो दीदी?
मैं अभी आपको ज्वाइन करी भाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। दीदी कैसी हो आप? थैंक यू सो मच। ब्रश करके आओ, जाओ नाश्ता कर लो, मैं फिर नहाऊंगी, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? हाँ ठीक है, आप कैसी हैं? रोटी बनाने जा रही हूँ। अच्छा दीदी बना लीजिए, रोटी बना लीजिए। मैं भी ठीक हूँ। मैं भी काम ही कर रही थी, अब जा रही हूँ नहाने। आज मैं भी लेट हो गई। थैंक यू सो मच।
जय भीम, नमो बुद्धाय। सिस्टर फूल कुमारी बहन, जय भीम। कैसी हो आप? स्वागत है आपका। कैसी हो सिस्टर? सिस्टर जी आप कैसी हो? तैयारी हुई कि नहीं आपकी जाने की लखनऊ? जल्दी से बताओ। आप चलोगी, हम भी चलेंगे पीछे पीछे आपके। हम ठीक है सिस्टर, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बहन, मैं भी ठीक हूँ। चलो चलते हैं लखनऊ, बिल्कुल जोर शोर से, एकदम जोश में, रेडी हो जाओ। और बताइए बच्चे कैसे हैं? बच्चे सब ठीक है बहन, आप बताओ आपके बच्चे कैसे हैं? हमारे बच्चे सब ठीक हैं। आज तो बच्चों की छुट्टी हो गई, संडे। अरे बहन आज नहीं, हमारे यहाँ हमारे बच्चों की सैटरडे संडे दोनों दिन रहती है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट स्कूलों में सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है। दोनों दिन में तो एकदम दिमाग खराब हो जाते हैं। और बताओ, चाय नाश्ता कुछ हुआ आपका कि नहीं अभी? फुल कुमारी सिस्टर जी आपका चाय वाय हुआ? ये मैट को फोल्ड कर लेना। बच्चे हैं तो दिमाग तो खराब करेंगे ही। हाँ बहन कर देते हैं, एक ही चीज 20 बार पूछते हैं। बच्चे अपने मम्मी का ही दिमाग खराब करेंगे ना। बिल्कुल बहन, बिल्कुल पापा का नहीं खराब करते हैं कि थोड़ा उनको परेशान करे, एहसास हो। अभी मैं सो के उठी हूँ 8, चाय बना रही हैं अभी। अच्छा बहन 8 बजे आप सो के उठी हो? लेट कुछ नहीं हुआ बहन उठने में? सो के उठने में लेट नहीं हुआ बहन? स्केल उठाओ बेटा, इसको ऐसे रखो, ये स्टील की है ना, चुभ जाएगी। स्केल को यहाँ से हटा दो। अभी ब्रश करने जा रही हूँ, तब चाय पीऊंगी। अच्छा सिस्टर, चाय वैसे भी पी लो, चाय से दांत साफ हो जाएगी, ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे हमसे ही मांगते हैं पैसे। अच्छा बहन, वो जानते हैं ना कि पापा के पास नहीं मिलेगा। अब पापा सारी सैलरी मम्मी को देते हैं, इसलिए बच्चे मांगते हमारे हस्बैंड आपकी बात सुन के हंस के चले गए है ना। जब मैं बोलती हूँ कि जब अपने पापा से मांगना तो कहेंगे पापा नहीं देंगे और तुम देती हो। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे हैं बहन, मम्मी से ज्यादा लगाव रखते हैं। कोई बात नहीं बहन, फिर बच्चों का स्कूल जल्दी होता है तब क्या करती हो? हम तो 4:30 बजे उठ जाते हैं, हमारे बच्चों को 7 बजे को स्कूल होता है।
7 बजे उठेंगे तो हमारे बच्चे घर पे ही रह जाएंगे, क्योंकि जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना तो उस दिन हमारी तबीयत ही खराब रहती है। खराब तो रहती है बहन, क्या करें, सब कुछ देखना पड़ता, वही हाल हमारी भी होती है। उठने के बाद चक्कर आने लगते हैं, लेकिन मजबूरी होती है ना, बच्चों को 7 बजे की स्कूल छोड़ना होता है तो जल्दी उठना होता है, इसलिए मैं अपने टाइम से ही उठती हूँ। ओके सिस्टर, थैंक यू। अरे सिस्टर, हमारे दांत तो ऐसे ही चमकते रहते हैं, सब लोग कहते हैं तुम्हारे दांत बड़े चमकते हैं। बिल्कुल बहन, इसको ऐसे कायम रखना अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर। आपके दांत सच में चमकते हैं। दांत क्या है, आप ही अलग चमकते हो, इसलिए आपके व्यवहार, आपके बात सब अच्छे लगते हैं, हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, आप बुरा भी नहीं मानती हो, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बात पर हंस रहे हैं भाई साहब। नहीं भाई साहब, बात पे नहीं हंसे हैं, भाई साहब पैसे वाली बात पे हंस दिए हैं। मैंने कह दिया ना कि हाँ सारी सैलरी मम्मी के पास होती है, इसलिए बच्चे मम्मी से मांगते हैं, इसलिए हंस दिए वो। सैलरी अब सारी दुकानों पे होती है। अच्छा, सही कह रहे हो। कर लोटा। बच्चे कहते हैं ना पापा से पैसे मांगता हूँ तो पापा डांट के भगा देते। नहीं बहन, मेरे हस्बैंड डांट के नहीं भगाते हैं, मेरे हस्बैंड तो बच्चों से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं डांटते, बल्कि मैं डांट देती हूँ बच्चों को, मेरे हस्बैंड कभी नहीं बच्चों को जल्दी डांटते हैं। मेरी बेटी है, वो तो बोलती रहती है मम्मी मुझे जहाँ पापा ड्यूटी कर रहे हैं ना वहाँ छोड़ दो, मैं बैठी रहूंगी। वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है। हमारे बच्चे तो 6:30 बजे जाते हैं और 2:30 आते हैं सिस्टर। तब कैसे बहन 7 बजे उठती हो? तब तो आपको जल्दी उठना पड़ता होगा ना, तभी तो बच्चे 6:30 जाएंगे। ट्यूशन का भी कोई मैसेज नहीं आया, संडे है ना, मैम अगर फ्री होंगी मैसेज करेंगे तब जाना है, वैसे नहीं, जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक नहीं। हाँ मैसेज आएगा तो जाना। हाँ ठीक है, तब तक अपना काम कर लो। बाग उठ जाओ। लाइक करना भूल गई थी, सॉरी सिस्टर, अभी लाइक करी हूँ मैं। कोई बात नहीं है बहन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सिस्टर, मुझे पता नहीं थी। अच्छा बहन, क्या नहीं पता था? क्या नहीं पता था बहन?
क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब कह के गए बाहर। वो ऐसे कहते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते बहन, और फालतू शब्द किसी को नहीं बोलते हैं। आप देखेंगे हमारी वीडियो में कहीं उठा के वो कहीं नहीं मिलेंगे, वो नहीं आते। बच्चे डरते हैं सिस्टर? बिल्कुल भी नहीं, हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं डरते। मैं बल्कि डांट देती हूँ तो मुझे डांटते हैं, क्यों डांटती हो बच्चों को, क्यों मारती हो? वो कभी नहीं मारते ना कभी डांटते हैं। इससे बड़ा नहीं मिला था, टैक्सी ले लेते उससे अच्छा, वो सही रहता है ना। ये सस्ता नहीं सही था। हम अपने टाइम पर ही उठते हैं सिस्टर, चाहे पत्थर पड़े और चाहे पानी पड़े। क्या बात बोलती हो बहन, सच में हंसी आ जाती है। पानी पत्थर पड़े। हमारी बड़ी लड़की है ना, खाना वाना बना लेती है, तो वह खाना बना लेती है अपने लिए और दोनों बच्चों के लिए, सुबह सुबह उठ जाती है। अच्छा बहन, आपकी बेटी कितनी साल की है? आपकी बेटी कितनी साल की है सिस्टर? बच्चों से अभी काम नहीं करवाना बहन, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बच्चों को अभी फ्री छोड़िए। बच्चे खाना बनाएंगे तो फिर उनकी भविष्य खराब हो जाएगी। पढ़ने दीजिए उनको, पढ़ने का टाइम जरूर देना चाहिए बच्चों को। सही कह रही हो, आप सुन गई थी, आप सुन गई थी, सही बिल्कुल करेक्ट, वही बात वो बोले थे। वो भी वही बोले थे, सही बात है, सारी सैलरी मम्मी के पास ही होती है, तो बच्चे किससे मांगेंगे, यही बात कह रहे थे वो भी। आपकी बेटी कितने साल की बहन?
हमारी लड़की बड़ी वाली 13 साल की है। अच्छा बहन, 13 साल की लड़की है, खाना बना लेती हैं बहन, ऐसा मत करो। उनको फ्री छोड़ो, पढ़ाई के लिए कोई भी काम नहीं करती सिस्टर, खाली सुबह उठकर अपने लिए बनाती है, दोनों बच्चों के लिए बस, और कुछ काम नहीं करती। कोई बात नहीं बहन, उतना काम बहुत है, 13 साल की बच्ची क्या करेगी? उतनी ही बहुत है बहन, बच्चों को हमेशा फ्री छोड़ो, क्योंकि यही समय होती है बच्चों को। अगर हम उनके साथ समय नहीं दे पा रहे हैं ना, तो उनको फ्री छोड़ना चाहिए, वो अच्छे से अपना पढ़ें। वैसे बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए, आध घंटे के लिए। ओके सिस्टर, हम चाय पीने जा रहे हैं, चाय पी लें तब आपसे बात करूँगी। ओके बहन, कोई बात नहीं, आप मेरी बात को बुरा मत मानना बहन, मैं सही कह रही हूँ। अनमोल, रनित भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, चले गए क्या भाई? क्या कर रही हो? भैया मैं कुछ काम कर रही हूँ, इसलिए फेस से नहीं आ पाई, अभी आऊँगी 10-15 मिनट बाद में। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपका तो लाइव चल रहा होगा बहन, आप अपनी लाइव अटेंड करिए, फिर मैं आपसे अभी दूसरे आर्टिस्ट से मिलती हूँ, थोड़ी बिजी हूँ। बच्चे आज घर पे हैं ना, सुबह से परेशान कर रखे हैं। सभी भाई बहनों को सादर करी, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच।
जय भीम, नमो बुद्धाय, सच्चिदानंद भैया, थैंक यू सो मच। खाना पीना हो गया। जय भीम, नमो बुद्धाय, सच्चिदानंद भैया। अभी नहीं हुआ भाई। और सब लोग घर में ठीक है? तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत ठीक है भाई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप बताओ, आप कैसे हो? मेरी तबीयत ठीक है भाई, आप बताओ आप कैसे हो? आपका नाश्ता वास्ता हुआ? मस्त हूँ। अच्छा, आप तो हमेशा ही मस्त रहते हो। कभी तो बोल दिया करो, नहीं सच्चाई। नाश्ता कर लिए आप? नाश्ता हुआ कि नहीं आपका, पूछ रही हूँ। खाना बन गया है कि नहीं? मेरा खाना बन गया है, आप बताओ आपका नाश्ता हुआ? एक सेब खा लिया हूँ और 4 खजूर खा लिया हूँ और फारा बन रहा है। अच्छा, किस चीज का फारा बन रहा है भैया? किस चीज का फारा बन रहा है? आलू का। अच्छा भैया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बच्चों की तो छुट्टी होगी, घर पर होंगे। हाँ, घर पर होंगे, बहुत मिस करते हैं तुमको भाई। रात में मैं समझा, श्रेया कमेंट कर रही है। नहीं, श्रेया नहीं कर रही थी, इसके पापा बैठे थे ना, श्रेया काम कर रही थी। मैंने कहा यार सपोर्ट कर देना, मैं बिजी हूँ। मैं किचन में थी ना, मैं 8 बजे तो लाइव पर से उठी, फिर उसके बाद किचन में गई, कपड़े उपड़े भी धोने थे, मशीन लगाई। मैंने कहा हो सकता है पानी वानी ना आए तो दिक्कत आ जाएगी, तो मैंने रात में ही मशीन लगा दिया। एक तरफ मशीन लगाई, एक तरफ खाना बना रही थी। तो फिर उसके पापा सपोर्ट कर रहे थे। वो समझ नहीं पाए कि हमारे श्रेया को बोल रहे हैं। वो मुझसे कह रहे यार, श्रेया कह रही मम्मी मामा का ना कमेंट आ रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो वो कह रहे हैं श्रेया श्रेया कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि अपनी श्रेया को बोल रहे। मैंने कहा अच्छा, तब मैंने फोन लेकर कमेंट किया। दोनों काम एक साथ करना पड़ता भाई। कभी कभी जब लाइव में आ जाते हैं ना तो सारा काम छूट जाता है, फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। वो तो शुक्र मनाओ कि आज बच्चों का स्कूल नहीं था, नहीं तो आधा काम रात में ही करके रखना पड़ता है, सब्जी काट के और वैसी चीजें। क्योंकि सुबह इतना जल्दी मुश्किल होता है, सबको नहलाना, तैयार करना, भेजना। कल से मेरा बंद हो जाएगा लाइव में आना जाना। कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो आप? क्यों ऐसा बोल रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो बताओ? बताओ कहाँ जा रहे हो, प्लीज बताओ। संजय भैया बताओ कहाँ जा रहे हो आप? मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई, रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो कल से आना जाना बंद हो जाएगा। हम तो सोचे कहीं जा रहे हो। कोई बात नहीं, रिचार्ज तो हो जाएगा शाम तक। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब की बार 199 का रिचार्ज किया हूँ, केवल बात करने वाला रिचार्ज कर दिया हूँ। अच्छा भैया, कोई बात नहीं है सच्चिदानंद भैया, कोई बात नहीं है। एक बार एंट्री मार देंगे तो भी हमारे लिए बहुत रहेगा। बाकी कोई बात नहीं है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। क्या करूं, मैं भी सोच रहा था 400 वाला करूं, फ्री रहे, मजबूरी थोड़ा पड़ जा रहा मेरा। सिम का प्रॉब्लम। सिम क्या प्रॉब्लम है भैया, सिम की क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी आपका भांजा हमसे लड़ रहा है, बोलता मामा बोले हैं डांटूंगा। तब से ये लोग बड़े खुश रहते हैं। हमारी बेटी कहती मम्मी आप बोलोगी ना तो मामा आपको डांटेंगे। हमें कमेंट में बोला था, हमने कहा अच्छा। खेलने के लिए उनको डांटना नहीं ठीक है दीदी, आप पढ़ने के लिए छोड़ना नहीं। बिल्कुल भाई, खेलते हैं, अब उतना टाइम तो नहीं निकाल पाते हैं ना, खेलने के लिए भी काम हो जाते हैं ना स्कूल के, बहुत सारे ट्यूशन के काम हो जाते हैं, पेरेंट्स को सुनना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए स्कूल के काम ज़्यादा हो जाते हैं, ट्यूशन के मिलते हैं, काम भी ज़रूरी है, खेलते भी हैं बीच बीच में। खेलने के टाइम पे लड़ाई जब कर देते हैं तब गुस्सा आता है, तब डांटती हूँ।
शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं महसूस आज भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं भाई कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है। आप पढ़े लिखे लोगों को फेल करते हो। ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम पढ़ा नहीं है। हम लोग पढ़ के क्या कर रहे हैं जो कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, नहीं बच्चे पढ़ लें। एक छोटा सा प्रयास करते हैं भाई बच्चों के लिए। थैंक यू भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। राजेश भैया जय भीम, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हाट इज श्रेया डूइंग? इंग्लिश कम पढ़े हैं भाई। सच्चिदानंद भैया, हम इंग्लिश नहीं आती है। थैंक यू राजेश भैया। श्रेया अभी पढ़ाई कर रही है, ट्यूशन का काम कर रही है। थैंक यू भैया, थैंक यू। श्रेया काम कर रही है भाई ट्यूशन का, सच्चिदानंद भैया। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमसे इंग्लिश में कंपटीशन करोगे क्या भैया? आवर डियर नाइस शिवानी एंड श्रेया आर यू वेल? अच्छा भैया, थैंक यू। और शिवानी नहीं है, शिवानी आपसे कंप्लेन भी करी थी। मम्मी मामा मेरा नाम बिगाड़ देते हैं, मुझे शिवानी शिवानी करके बुलाते हैं। मेरा नाम कोई शिवानी थोड़ी है। नहीं भाई, दूसरे कमरे में वो काम कर रही है अपना ट्यूशन का काम। यहाँ शोर मचा रही थी ना, तो मैंने कहा कि मैं लाइव चला रही हूँ, दूसरे कमरे में चले जाओ। तो वहाँ बैठ के वो काम कर रही हैं, क्योंकि उनको ट्यूशन आज भी जाना है। मैं भी थोड़ा बहुत उससे इंग्लिश का ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। ओके भैया, थैंक यू राजेश भैया, थैंक यू। बाय बाय। आपका नाश्ता वास्ता हुआ कि नहीं? बड़े जल्दी बाय करके जा रहे हैं आप। नाश्ता हुआ आपका? जय भीम भैया, जय भीम। नाश्ता हुआ आपका कि नहीं? लाइव में मैं उनको साथ में नहीं रखती हूँ सच्चिदानंद भैया, अपने लाइव में साथ नहीं रखती हूँ।
लाइफ में नहीं। हाँ सच्चिदानंद भैया, गिरीश गौतम भैया, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय बड़े भैया, कैसे हैं आप? सुप्रभात भैया, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो भैया आप? गौतम भैया कैसे हैं आप? आपका नाश्ता वास्ता हुआ? बस आपकी दुआ है दीदी और बाबा साहब की कृपा से सब बढ़िया है दीदी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सब बढ़िया रहना चाहिए, जो जहाँ भी रहे सब बढ़िया रहे। आपका नाश्ता हुआ भैया? ड्यूटी पर हूँ दीदी। ओके भैया, थैंक यू भैया। ड्यूटी कर लीजिए आप, ड्यूटी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच भैया। आप आए हमारे लाइव में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सच्चिदानंद भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया सच्चिदानंद भैया, थैंक यू सो मच।
ओके दीदी, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट लाइव में मिलता हूँ दीदी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। जाइए, आप ड्यूटी में हैं, ड्यूटी करिए। थैंक यू भैया। बाय भैया, बाय। थैंक यू सच्चिदानंद भैया, थैंक यू सो मच। हाँ भैया, खाना दोपहर में बनता है, लेकिन रोटी सब्जी वब्जी सुबह बन जाती है नाश्ते में, और बाकी तो दोपहर में ही खाते हैं हम लोग, आदत हो गई है ना। सुबह सब्जी रोटी बना देते हैं, जिसको खाना होगा खा लेगा, नाश्ता कर लेगा। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? ये दरवाजा बंद कर दो, ऊपर से बाबूजी आते हैं, अच्छा नहीं लगता। या पर्दा खींच दो। मेरा भी दोपहर का खाना बना लेना, थोड़ा पेट भर जाएगा इस गरीब का भी। भाई ऐसा काहे बोल रहे हो सच्चिदानंद भैया, ऐसा काहे बोल रहे हो? क्या चीज हो आज कर रहा है? क्या चीज भाई, बताओ, मैं समझी नहीं कमेंट का मतलब। बोलो सच्चिदानंद भैया, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आर्यन बाबू ठीक है? हाँ भाई, आर्यन ठीक है। आर्यन ठीक है, बदमाश ज्यादा है। अभी जैसे एम्बुलेंस की तरह आवाज आ रहा था। कहाँ? मेरे यहाँ? मेरे यहाँ सुनाई दिया भाई? मेरे यहाँ कोई एम्बुलेंस की आवाज नहीं आ रही भाई।
सोनू भैया जय भीम नमः बुधाय, स्वागत है भैया आपका। कैसे हो आप? सोनू भैया आप कैसे हो? मस्त हैं। अच्छा भैया, मस्त ही रहना चाहिए। ड्यूटी से आ गए? आप सोए नहीं आज? हम तो सोचे आप सो रहे होंगे। आज जल्दी था। आज जल्दी इतना गया क्या हम। अच्छा भैया, भांजा किसका है? मेरा भांजा है ना। हाँ भाई, बिल्कुल भांजा है आपका है। उठ गया? अच्छा भैया, इतना जल्दी आप उठ गए। अच्छा, ड्यूटी भी जाना है ना, 2 बजे आपको जाना है, तो आराम से सो के उठते हैं आप। भांजा आपका है भाई, मीठा बहुत खाता है। मिठाइयाँ भी चाय से बोल डुबो कर खाता है, बिस्किट तो छोड़ दो। इसलिए मीठा बहुत खाता है। डॉक्टर ने मना भी कर रखा उसको। मिठाइयाँ कितनी भी रस भरी हो, उसको चाय में डुबो डुबो के खा लेता, पता नहीं कैसे। हंस भी रहा है, दूसरे बेड पे सामने बैठा है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। और बताइए भैया, गुड़िया रानी कैसी हैं? भाभी कैसी हैं? श्रद्धा बहन के लाइव में मैं एक मिले थे, आज वह हमसे मिले। अच्छा भैया, आपको कहाँ मिले? मैंने आपको श्रद्धा बहन के लाइव में भी देखा, संगीता दीदी की लाइव में भी देखा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप नाश्ता वास्ता कर लीजिए, कुछ खा पी के फिर सो जाइए आप, क्योंकि आपको ड्यूटी भी जाना होता है। चलो ठीक है, अभी खा सकते हैं। अच्छा, अभी खा सकते हैं? नहीं भाई, दिक्कत होती है खाने से। संजय ब्लॉग, जय भीम नमो बुद्धाय भैया, जय भीम संजय भैया, बड़े भैया, स्वागत आपका हमारी लाइव में। थैंक यू सो मच भैया। कैसे हो आप? रवि सोनू ब्लॉग्स नाम है। अच्छा भैया, रवि सोनू ब्लॉग्स नाम है। अच्छा, थैंक यू भैया। जय भीम नमः बुद्धाय संजय भैया, जय भीम। आई एम विकास बाबू, जय भीम भैया, जय भीम विकास भैया, जय भीम संजय भैया, जय भीम। गुड मॉर्निंग विकास भैया, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? खाना पीना हो गया आपका? नहीं भैया, खाना पीना तो अभी नहीं हुआ। आपका हो गया भैया? थैंक यू विकास भैया, थैंक यू। बाद में मैं बोल दूंगा, नहीं खाएगा, अभी मिठाई खाने दो बाबू को। अच्छा सच्चिदानंद भैया, नुकसान भी तो करता है, आप इतना बढ़ावा दोगे तो और नुकसान करेगा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? संजय ब्लॉग्स भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी अभी गांव आया हूँ। अच्छा भैया, आप गांव चले गए? थैंक यू भैया, थैंक यू। आप कहाँ से हो भैया? जौनपुर से ना?
संजय भैया बताना। आई एम विकास बाबू, थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम जय मूल निवासी, जय भीम जय मूल निवासी भैया, बड़े भैया जी, बड़े भैया जी बताना। संजय भैया जी आप जौनपुर से हैं ना? जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम भैया। यूपी बलिया से, सॉरी भैया मैं भूल गई थी, सॉरी, यूपी बलिया से। ओके भैया, थैंक यू। आप यूपी बलिया से हैं, हम यूपी आजमगढ़ से हैं। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत भैया, थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत लोगों को भूल जाता हूँ। आप नहीं बोलते हो भैया, कभी कभी मेरे माइंड से ऐसा हो जाता, उतर जाती है वो बातें। जय भीम जय संविधान, जय भीम जय संविधान बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। बलिया जिला है, हाँ भैया बलिया जिला है। विकास भैया आप कहाँ से हो? विकास भैया बताना आप। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम भैया, बड़े भैया जी, जय भीम नमो बुद्धाय। विकास भैया बताना है आप कहाँ से हो? जय भीम जय मूल निवासी। रात में मैं बोल रहा था मिलने को, मैं बोला ठीक, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उससे मिलने गया था। अच्छा भैया आप मिल भी लिए? हाँ मैंने कमेंट में देखा था, जो बोल रहे थे हम बम्बई से है ना। अच्छा आपने मिल लिया, थैंक यू सो मच भैया। चलिए आप पास में दोस्ती हो गई। सोनू भाई को जय भीम नमो बुद्धाय। सोनू भैया हमारे बड़े भैया संजय आपको जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। सच्चिदानंद भैया, जिस दिन से मैं बोल दूंगा उसी दिन से बाबू नहीं खाएगा, चाहे देख लेना, मेरी गारंटी है। सुन रहे हो बाबू? मामा क्या कर रहे हैं? जिस दिन से मैं बोल दूंगा उस दिन से बाबू मीठा ज्यादा नहीं खाएगा। बोलो सच है? सच है? छोड़ दोगे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, देख लो। करा नहीं छोड़ूंगा। प्रमाण फट के हाथ में आ जाए ना छोड़ूंगा। जाना। जय भीम भैया, जय भीम। हमारे सोनू भैया संजय भैया को जय भीम बोल रहे हैं। जय भीम जय संविधान, जय भीम जय संविधान बड़े भैया जी। नहीं छोड़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अगर कह दूंगा बाबू मेरा बात मानेगा, मुझे विश्वास से कम कर देगा खाना मीठा। अच्छा भाई, अच्छी बात है, किसी की बात तो माने। मिल लिया और गए भी, उनको लेट हो रहा था। अच्छा भैया वो चले भी गए, थैंक यू, आप मिल लिए, बहुत अच्छा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत बड़े भैया जी। विकास भैया जी थैंक यू, थैंक यू। सोनू भैया मैं रात में ना काम ज्यादा मुझे था ना, इसलिए मैं ज्यादा टाइम तक नहीं लाइव में रुक पाई। जब आप लोगों की बात हो रही थी तो फिर मैं लाइव में से आ गई थी। अपने प्यारे भांजे पर मुझे पूरा भरोसा है, माँ का कहना मानेगा और मिठाई कम कर देगा खाना। ओके भैया, चलो सिस्टर अभी मैं आया हूँ, जा रहा हूँ नहाने। ओके भैया थैंक यू, आप जाइए नहा लीजिए, खा लीजिए, रेस्ट करिए भैया। आप आ गए हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय भीम जय संविधान भैया, थैंक यू भैया, जाइए आप।
इसलिए जल्दी उठ गया हूँ। अच्छा, इसलिए जल्दी उठ गए हो। जय भीम जय मूल निवासी, जय भीम जय मूल निवासी भैया। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम बड़े भैया जी, जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच बड़े भैया जी, थैंक यू। आप जाइए, नहा लीजिए, खा लीजिए। सफर करने के बाद शरीर घूमती रहती है, जैसे लगता है हम अभी सफर ही कर रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आर्यन बाबू, हाउ many फ्रेंड डू यू हैव इंग्लिश? आर्यन बाबू गए भैया यहाँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। विकास कुमार, जय भीम। जय भीम भैया, जय भीम। संजय भैया, जय भीम नमो बुद्धाय। बाय भैया, बाय। थैंक यू सो मच। जाइए आप। आर्यन, चमार जी, थैंक यू भैया। चमार जी हैं। कहाँ चले गए? आर्यन लिख दो। आई हैव 3 फ्रेंड्स। अच्छा, पहले कमेंट ऊपर पढ़ो, उसके बाद लिखो। सच्चिदानंद भैया क्या लिखे हैं? आर्यन बाबू, हाउ मनी फ्रेंड डू यू हैव इंग्लिश? जय भीम सभी भाइयों बहनों को, जय भीम नमो बुद्धाय भैया, जय भीम। थैंक यू सो मच। विकास भैया, जय भीम भैया, जय भीम नमो बुद्धाय। आई एम एस के बाबू। अच्छा भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। राइट, क्या राइट सच्चिदानंद भैया, क्या राइट बताओ ना। थैंक यू विकास भैया, थैंक यू, थैंक यू। खाना पीना हो गया? नहीं भैया, बन गया है, कुछ हुआ नहीं है। खाना पीना होगा टाइम से। अभी अभी टाइम नहीं हुआ है, 12 बजे से पहले नहीं खाते। आपका हुआ भैया?
सोनू भैया आपका हुआ? मैं आ गया हूँ दुकान पर, थोड़ा मैं झाड़ू लगा लूं। ओके भैया, ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं है, आप काम कर लो। मैं इतना जल्दी नहीं खाता हूँ। अच्छा भैया, आप भी जल्दी नहीं खाते हो? फिर भी नाश्ता वास्ता तो करके सो। मैं आप ही को सोच रही थी, सोनू भैया सोए होंगे आके ड्यूटी से, शाम को आएंगे लाइव में, तब तक आप पधार दिए। मैं सोची हैं भैया आज क्यों इतना जल्दी आ गए, आपका खाना हो गया? नहीं विकास भैया, मेरा खाना नहीं हुआ है, आप बताइए आपका हो गया? हो गया है। अच्छा भैया, थैंक यू, हो गया है आपका खाना। थैंक यू। दरवाजा बंद कर देना जरा। हाँ, दरवाजा खुला यार। चलिए, या तो पर्दा खींच दो, पर्दा ही खींच दो। बस रहने दो। 8 बजे खा लेता हूँ। ओके भैया, थैंक यू, अच्छी बात है, आप खा लेते हैं। हम लोगों का भी हिस्सा खा लिया करो, क्योंकि हम लोग बहुत लेट खाते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। नाम लो शैतान हाजिर। नहीं भैया, ऐसा काहे बोल रहे हो? नाम लो शैतान हाजिर नहीं, मन में ऐसे ख्याल आए थे कि सोनू भैया इतनी टाइम लाइव में नहीं आएंगे, वो शाम को ही फ्री होते हैं, शाम को आएंगे। तब तक मैंने देखा आपका कमेंट भी आ गया जस्ट, मैंने कहा है खा लिया करो, खा लिया करूंगा। ओके भैया, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सच्चिदानंद भैया, विकास भैया, थैंक यू। थैंक यू सच्चिदानंद भैया। आज हमको 2 घंटा पहले भी जाना है। अच्छा भैया, आज 2 घंटा पहले जाना है, इसका मतलब आप 2 बजे जाते हैं, 12 ही बजे जाना होगा आपको फिर, है भैया? ड्यूटी कब जाते हैं? 4 बजे जाते हैं कि 2 बजे?
आप 4 बजे ड्यूटी जाते हैं, इसका मतलब आज 2 बजे जाना होगा आपको। सोनू भाई आप भी लाइव चालू करो। हाँ भैया, भैया से तो बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं नहीं हमें शर्म आता है। बताओ लाइव में कैसी शर्म है। हाँ अच्छा भैया। लाइव कब चालू कर रहे हो सोनू भैया बताओ। करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हो कैसे? आप कोशिश करते तो वो चीज होती नहीं, आप करते ही नहीं हो। लाइव स्टार्ट करो भैया, सोनू भैया आप भी। अच्छा लगेगा, एक दूसरे का समूह बन गया है अब। थैंक यू भैया, थैंक यू। सतीश भैया जी जय भीम, नमः बुधाय भैया जय भीम। कैसे हो बड़े भैया जी, स्वागत आपका। संतोष गणपत जय भिवाली हूँ के क्या लिखे हो भैया, जो दोबारा कमेंट करना, समझ नहीं पाई। हम पुष्पा हैं। अच्छा दीदी जय भीम नमो बुधाय, समझ नहीं पाए। पुष्पा बहन जय भीम नमो बुधाय। पुष्पा दीदी आपको सच्चिदानंद भैया जी जय भीम नमो बुधाय बोल रहे हैं दीदी। दीदी आप क्या समझ नहीं पाती हो? भैया मैं समझ पाती हूँ, ये संतोष गणपत भैया क्या लिखे हैं मैं नहीं समझ पाई, एक बार आप समझो तो बताओ। मैं तो तुरंत समझ जाता हूँ, समझ जाते हो तो बताओ, फास्ट बताओ फास्ट। क्या लिखे हैं? भीमवाली हो, भीमवादी हो, क्या लिखे हैं भैया? जय भीम वाली हैं क्या? हाँ हाँ भैया हम जय भीम वाले हैं। आप बताइए आप क्या हैं? जय भीम सभी साथियों बहनों को, जय भीम भैया, सोनू भैया जय भीम। संतोष गणपत भैया बताइए आप क्या हैं? जय भीम भैया जय भीम। थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। जय भीम नमो बुधाय, दिल की गहराइयों से आपको बहुत 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 धन्यवाद।
सच्चिदानंद भैया को भी जय भीम नमो बुधाय। सच्चिदानंद भैया, हमारी पुष्पा दीदी आपको जय भीम नमो बुधाय बोल रही हैं। पुष्पा बहन, दाल भात रोटी बन गया। दलिया भात रोटी खाते हो भाई, कभी कुछ और खा लिया करो। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुधाय। जी बिल्कुल ठीक है सब। ओके भाई दीदी, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए, जो जहाँ रहे ठीक रहे। और बताइए दीदी, बच्चे कैसे हैं? भैया जी आप बताओ कैसे हो? नहीं भैया, संतोष भैया, हम तो नहीं देखे हैं। हम तो नहीं देखे हैं भैया। देखो क्या देखें बताओ। जय भीम रितेश कुमार, जय भीम नमो बुधाय भैया, थैंक यू सो मच। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? चवरदार तालाब। अच्छा भैया। गौतम बुद्ध को। हमारे सोनू भैया बता रहे हैं, सच्चिदानंद भैया गौतम बुद्ध को। आपका गांव कौन सा है? गांव क्या करोगे भैया, आप पहले बताओ। पिंटू जी तरफ से जय भीम। जय भीम नमो बुधाय भैया, जय भीम। पिंटू जी हैं आप? हमारा गांव क्या करोगे भैया, हमारा जिला पूछो तो बता दें। हम यूपी आजमगढ़ से हैं। आप बताइए आप कहाँ से हैं? संतोष गणपत भैया बताइए आप कहाँ से हैं? गलत पूछा क्या? नहीं भैया गलत नहीं पूछे आप, लेकिन लाइव में हर एक चीज़ संभव नहीं होती है ना शेयर करना। गलत नहीं पूछे हैं आप, अच्छे पूछे हैं, तभी बता रही हूँ। गांव नहीं बता सकती, जिला बता दिया। आपसे पूछ रही हैं, आप बताइए आप कहाँ से? बस्ती से हैं हम भी। ओके भैया, थैंक यू सो मच। हमारा गांव सिद्धार्थ नगर है भैया। मैं तो जानती हूँ सोनू भैया, आपका गांव जानती हूँ। संक्षेप में, बुद्ध को एशिया का प्रकाश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके उपदेशों ने पूरे एशिया को नैतिक, आध्यात्मिक और संस्कृत दिशा दिखाकर जगमगा दिया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भैया। महाड़। अच्छा भैया, मैं तो नाम ही नहीं सुनी हूँ, क्या समझूंगी।
नाम नहीं सुनी हूँ भैया, सॉरी। संतोष गणपत भैया। अरे जय भीम वाले हैं ना, महार चवरदार। अच्छा भैया। हाँ संतोष गणपत भाई, आपकी बात सच्ची है। हमारे सच्चिदानंदन भैया बोल रहे हैं। अंबेडकर रानी सत्याग्रह किया ना, किधर किया? हमें नहीं पता है भैया। हमको नहीं पता है भैया, सच्ची बता रही हूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों से शायद हमें कुछ सीख मिले। ये चौदार तालाब ओल्ड इतिहास में है आपको? अच्छा भैया, अच्छा, थैंक यू। देखेंगे भैया, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती थी। आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल भैया, आपकी बात सही है, मालूम होना चाहिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं भैया, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। सॉरी, गलत मत मानिएगा आप लोग। आप लोग ऐसे बताते रहेंगे, शायद कुछ नॉलेज होगी हमको। जय भीम वाली होना मालूम होना चाहिए। बिल्कुल भैया, मालूम होना चाहिए। धीरे धीरे सीखेंगे, एक बार कोई चीज़ नहीं किसी को मालूम होती है। जब आदमी अपने लाइफ में सुधार करता है ना, तो गलतियाँ कुछ पीछे रह जाती है, उसको धीरे धीरे सुधार पाता है, एक बार नहीं हो पाती है। हाँ भाई, अंबेडकर साहब ने महार चौदार तालाब पर सत्याग्रह किया था। अच्छा भैया, थैंक यू। सच्चिदानंद भाई, इनको मालूम नहीं है। हाँ भैया, हमको मालूम नहीं है, तभी तो पूछ रही हूँ। हार मानने में कोई बुराई नहीं है भैया। जो चीज़ नहीं आती है नहीं आती है, जो चीज़ आती तो बताती नहीं। क्या चीज़?
रही। हर किसी के अपने अंदर ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में राजा नहीं बन सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए महत्व सबको देनी चाहिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सही कह रहे हो आप। थैंक यू। जय भीम का गर्व चाहिए। बिल्कुल भैया, चाहिए। धीरे धीरे हो जाएगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। हर कोई सब बात नहीं जानता, लेकिन हम लोगों का फर्ज रहता है सभी भाई बहनों को बताना, जो भी हमारे समाज के लोग हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सही कह रहे हैं। जय भीम गर्व से बोलेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं भैया जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो नहीं बोल सकते। बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। धीरे धीरे सीखेंगे समाज में आकर के। जो चीज़ पहले हमारे सामने नहीं आई है, वो चीज़ को टाइम लगेगा ना सीखने में। 20 मार्च को आओ महाड़ में। अच्छा भैया, सॉरी, हम तो लेडीज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी जो जेंट्स हैं वो तो जाते आते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है भैया। निकलेंगे बाहर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छी बात होनी चाहिए ताकि कुछ सीख प्राप्त हो इंसान को। इसीलिए कहते हैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ में ऐसी बातें होनी चाहिए कि कुछ शिक्षा प्राप्त हो सके। क्यों कूद रहे हो बेटा? संतोष गणपत भाई, आपको हृदय से जय भीम नमो बुधाय करता है आपका छोटा भाई। संतोष भैया, हमारे सच्चिदानंद भैया आपको जय भीम नमो बुधाय कह रहे हैं। संतोष भैया, हमसे कुछ गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ भैया। हमारे महापुरुषों के बलिदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल भैया, नहीं भूलना चाहिए। सही बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। कुछ गलती हो गई होगी तो सॉरी बोल रही हूँ, नाराज नहीं होइएगा। जो सवाल में कल किया था, गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, बहुत लोगों को नहीं पता रहता। सही बात भैया, नहीं पता होता है। हम तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। जब बाहर निकले तभी हमको पता चला बाबा साहब के बारे में। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। सत्येंद्र चौहान, राम राम। राम राम भैया जी, स्वागत है आपका। संतोष
गणपत ओके दीदी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र भैया जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है, लाइक कर दिया, ओके भैया, थैंक यू सो मच, लाइक कर दिए। दीदी जॉब पे हैं क्या? अरे भैया जॉब पे होते तो हम ऐसे यूट्यूब पे क्यों आते, बताइए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं भैया, जॉब कहाँ से करेंगे। संतोष भैया पढ़े लिखे नहीं हैं, जो भाई बहन कोई भी अगर सवाल जानते हैं तो सवाल प्रसार प्रसार करने से ज्ञान बढ़ता। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू, यही चीज़ तो हम भी बोलते हैं, हमें किसी चीज़ का एतराज़ नहीं होता है, नहीं काहे पूछे हो या हमें नहीं आ रहा, इसका नहीं होना चाहिए, जिसको जो भी आए ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए ताकि देखने वाले और सुनने वाले पढ़ने वाले को भी कुछ सीख मिल सके, ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू, आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय भीम नमो बुद्धाय। समाज में जाओ, बिल्कुल भैया बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। संगीता बहन को रात को फोटो भेजा था बाबा साहब राजगिरीश का, अच्छा भैया, हाँ आप सब जुड़े हैं ना इंस्टाग्राम से। आप इंस्टाग्राम से जुड़े ना भैया, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू संतोष भैया, थैंक यू। ओके दीदी, थैंक यू भैया, थैंक यू बड़े भैया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे कुछ सीखने को भी मिला। बाय दीदी, बाय भैया, बाय बाय, जाइए आप, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
हाँ क्या? हाँ भैया, सोनू भैया। रात में वही रास्ते से मैं आता हूँ। अच्छा भैया, जहाँ पे वो रहते थे भैया, वो सरता दीदी कहाँ रहती हैं? अच्छा, जो संगीता दीदी के, अच्छा समझ गई, अभी समझी मैं, जो उनके इंस्टा पर भेजे हो आप फोटो। ओके भैया, थैंक यू। हम तो इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ नहीं चलाते हैं। मेरा कमेंट नहीं जा रहा क्या? आ तो रहा भैया, कमेंट आपका आ तो रहा है, बोलो। कमेंट तो आ रहा सोनू भैया।
खा पी लो। ओके भैया, थैंक यू। अब हम भी यही सोच रहे हैं लाइव एंड करने के लिए। थैंक यू। आप भी खा लो भैया, आपको तो ड्यूटी करनी है, हमको तो घर में रहना है, हम जब मर्जी तब खा लेंगे। आप सोए भी नहीं आज, आप सो लीजिए, खा पी के थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट कर लीजिए। हम लोग तो घर पे रहते हैं, आराम ही करना होता है, कौन सा काम है घर में। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी खा लीजिए भैया। बाय सोनू भैया। सभी भाई बहनों को जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।